Hello everyone, in this video session I'm going to discuss a very important topic from paper 2 with respect to subject codes like commerce, management and economics. In this you have a very important subject that is business economics. Under that there is a very important topic that is indifference curve analysis. Why I'm saying this is an important topic? Because in every session, in every year of UGC NET exam, you will get a question from this topic. So in this video session, I'm going to discuss indifference curve analysis, its meaning, marginal rate of substitution, assumptions and properties of indifference curve along with its PYQs. तो आप इस वीडियो को end तक देखें and prepare this topic along with this video, and we will also discuss PYQs. So all the best. What is indifference curve analysis? Indifference curve analysis is a tool to analyze consumer behavior towards different products or commodities which a consumer is willing to buy or not. So under this approach, utility, that is usefulness of different products or commodities, the utility is measured in ordinal numbers. Now what do we mean by ordinal numbers? Ordinal numbers का क्या मतलब है? Ordinal numbers means that the utility from the product or commodity, it can be expressed as preference of the consumer, कि consumer किस product को या commodity को क्या preference देता है. The consumer is able to tell the order of his preference for different products or commodities. For example, if a consumer prefers coffee over tea, it means कि ये वाला जो consumer है वो coffee को first rank देता है, फर्स्ट प्रेफरेंस देता है एंड टी को सेकंड प्रेफरेंस, सेकंड रैंक दे रहा है. राइट, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट, फ्रॉम यूजीसी नेट एंगल जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं वो ये लिखे हुए हैं. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को मैच करना है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के साथ, एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को मैच करना है विद द डेवलपर्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. द नेम्स आर हिक्स एंड एलन. So Hicks and Allen, these are the persons who have developed indifference curve analysis concept. They are also called as propounders of this concept. Now an important term is indifference curve. So what is this indifference curve? You can see in the figure. डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं. इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, यू कैन सी ए बी सी डी, ये दो कमोडिटीज के पॉइंट्स हैं, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई इन दिस फिगर. तो ये कमोडिटी कोई भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ऑरेंजेस हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, दो कमोडिटीज which yield the same utility or same level of satisfaction to the consumer. तो try to understand, indifference curve एक ऐसा कर्व है जिस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे दो कमोडिटीज की वो कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो सारे पॉइंट्स सेम यूटिलिटी या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं टू द कंज्यूमर. That is why it is also called as iso utility curve or equal utility curve. Now in this figure, on x-axis commodity X दिया है, on y-axis commodity Y दिया है. When a consumer consumes 1 unit of commodity X, आप देख सकते हैं y-axis पे 10 units of commodity Y shown है. When a consumer consumes second unit of commodity X, on y-axis 7 units of commodity Y given है, shown है. Same right side पे X and Y series बनाई हुई है. X, that is commodity X, it represents number of units of consumption of X commodity 1, 2, 3 and 4, and Y column में 10, 7, 5, 4. You can observe कि जो second commodity है Y, उस case में जो number of units consumed by the consumer है वो decrease हो रहे हैं. Right? So I repeat over here, X commodity के जो units हैं 1, 2, 3, 4 वो increase हो रहे हैं, but Y commodity के जो units हैं वो decrease हो रहे हैं. तो इस concept को कहते हैं marginal rate of substitution, which we will discuss elaboratively next.
Marginal rate of substitution, it is a rate at which in order to get an additional unit of a commodity, a consumer is willing to sacrifice the number of units of another commodity. आपको यहाँ पे फोकस करना है कि एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी को बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए अगर कंज्यूमर विलिंग है टू सेक्रीफाइस द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी, दैट रेट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। जैसे अभी हम पीछे एग्जांपल करके आ रहे हैं कि जब x कमोडिटी के यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम 1 to 2 to 3 to 4, तो y जो कमोडिटी है उसके यूनिट्स जो हैं कंज्यूमर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। पहले 10 परचेज किए थे, उसके बाद 7, फिर 5, फिर 4। तो ये जिस रेट पे वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है उसे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आप देख सकते हैं इस टेबल में वी कैन राइट इट एज इन रेशियो फॉर्म 3:1, 2:1, 1:1। और जब ये रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, पहले 3 यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था कंज्यूमर, देन 2, देन 1, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, right? So this is UGC NET question. You should know law of diminishing marginal rate of substitution. Next, आपको यहाँ पे फॉर्मूला प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से, बिकॉज बेस्ड अपॉन फॉर्मूलाज यू गेट UGC NET क्वेश्चंस। MRS नीचे एक्स वाई लिखा है, इट इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव का साइन यहाँ पे अटैच किया है, डेल्टा वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी y डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x, ठीक है। तो डेल्टा y का क्या मतलब है, 10 से 7 यूनिट्स हो रहे हैं, राइट। तो वो क्या है, वो चेंज है, उसका जो डिफरेंस है वो क्या है, 3 है, और एडिशनल 1 यूनिट एड ऑन हो रहा है, तो 3/1 यहाँ में से 3:1 लिख सकते हैं। Now this is a PYQ based upon marginal rate of substitution. Read it carefully and you have to give your answers in the comment section. So in case of indifference curve of two goods x and y, as consumption of x increases, MRS XY increases, MRS XY decreases, MRS XY remains the same, or first MRS XY increases but later on MRS XY decreases. Give your answers in the comment section below. Now, based upon the concept knowledge we have gained before regarding MRS, this question is very easy. आप इस फिगर में देखें, OX एक्सिस पे कमोडिटी X आएगा एंड OY एक्सिस पे कमोडिटी Y आएगा, राइट। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन दोनों कमोडिटीज के केस में क्या होगा, MRS XY it will decrease. हमने यही स्टडी किया था under the concept of diminishing marginal rate of substitution, right? Now attempt another question on marginal rate of substitution. Read this question carefully and give your answers in the comment section below. I hope everybody has correctly attempted this question. So again, ये आपकी knowledge based ही है। Questions जो हैं ये सारे के सारे, अगर आपको concepts अच्छे से आते हैं, you are able to attempt these questions 100% correct. So what it is, when a consumer increases mind में याद रखना है, and उसको आपने डिपिक्ट करना है, एनालाइज करना है, विजुअलाइज करना है कि OX एक्सिस के ऊपर यूनिट्स क्या थे, वो वाले इंक्रीज हो रहे थे बाय गिविंग अप सम यूनिट्स ऑफ Y कमोडिटी के जो यूनिट्स थे वो OY एक्सिस के ऊपर थी, एंड इवन टू अटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी कैलकुलेटेड बाय, राइट। तो हमें जो ऑप्शंस दी हुई हैं, अगर हम सेकेंड ऑप्शन को ऑब्जर्व करें, वहां पे लिखा है चेंज इन X कमोडिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y कमोडिटी। सो ये जो ऑप्शन है ये तो क्लियर कट क्रॉस डाउन हो जाती है, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी की हमने यहाँ पे बात नहीं की है। सेम वे जो ऑप्शन नंबर 4 है वहां पर भी चेंज इन Y कमोडिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी लिखा है, तो सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपकी पहले ही क्रॉस डाउन हो जाती है, राइट। नाउ देयर इज अ फाइट फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में। अगर
आपने कॉन्सेप्ट को एंड फॉर्मूला को अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आप गलती नहीं करोगे। न्यूमरेटर में हमने क्या लिखा था? न्यूमरेटर में हमने डेल्टा वाई लिखा था और डेल्टा वाई किसे रिप्रेजेंट कर रहा था? जो सेक्रीफाइसिंग यूनिट्स हैं, सेक्रीफाइसिंग यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? चेंज इन वाई कमोडिटी डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जिस कमोडिटी के यूनिट्स को हम एड ऑन कर रहे हैं, एडिशनल कीवर्ड है, या हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस केस में आंसर क्या होगा? थर्ड, चेंज इन वाई कमोडिटी न्यूमरेटर में आएगा, जो सेक्रीफाइसिंग कमोडिटी के यूनिट्स हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कमोडिटी। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो उल्टा लिखा हुआ है, उसमें एक्स कमोडिटी एडिशनल न्यूमरेटर में लिखा है एंड डिनोमिनेटर में जो सेक्रीफाइसिंग कमोडिटी है that is why वो डिनोमिनेटर में लिखा है। According to the formula, option number 1 is incorrect. Next most important topic is assumptions of indifference curve analysis. First point is rationality. The consumer is assumed to be a rational human being. It means कि जो consumer है वो aim कर रहा है on maximizing his total satisfaction given his income and prices of the goods and services that he or she consumes. Ordinal utility. We have already discussed कि indifference curve analysis के अंदर जो utility है वो measure की जाती है in ordinal numbers. Diminishing MRS. You have to remember कि जो indifference curve analysis का जो concept है, it is based upon diminishing marginal rate of substitution, that is MRS. Non-satiety. The consumer never reaches the point of saturation. इसका क्या मतलब है कि जो एक consumer है वो कभी भी completely satisfy नहीं होता, वो कभी भी fully satisfy नहीं होता, right? Next, another important assumption is transitivity. इसका क्या मतलब है? It means if a consumer prefers A combination of two commodities to B combination of two commodities and अगर वो prefer कर रहा है B combination to C combination, then he will definitely prefer A combination to C combination. राइट, आई होप आपको ट्रांजिटिविटी वाली assumption जो है वो क्लियर होगी। नेक्स्ट जो है लिखा है कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइसेस। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर प्रेफर कर रहा है कॉफी ओवर टी इन वन पॉइंट ऑफ टाइम, इन वन पीरियड, देन ही विल डेफिनेटली प्रेफर कॉफी को ही वो प्रेफर करेगा टी को अनदर पॉइंट ऑफ टाइम। हम ये नहीं कह सकते कि आज हम कह रहे हैं कि हमें कॉफ़ी पसंद है, हम कॉफ़ी को प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर टी, और 5 दिन के बाद हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें टी प्रेफर्ड है दैन कॉफ़ी। तो ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि कंसिस्टेंसी है कंज्यूमर के चॉइसेस में, तभी हम इस कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे, राइट? सो यू हैव टू prepare these assumptions very nicely. आपके माइंड में ये keywords होने चाहिए: rationality, ordinal utility, diminishing MRS, non-satiety, transitivity and consistency of choices. UGC NET question is, out of the following which is not an assumption of indifference curve? Another most important topic is properties of indifference curve. You have to learn all these properties very nicely. Indifference curves have negative slope. ये हम already discuss कर चुके हैं कि जो indifference curves होते हैं उनका जो curve है वो negative slope है, वो downward sloping curve है। जो indifference curves हैं they are convex to the origin. क्यों? क्योंकि Indifference curve analysis जो है, it is based on the concept of diminishing marginal rate of substitution, according to which as a consumer goes on consuming more and more units of a commodity, he or she is willing to sacrifice less and less number of units of another commodity. तो इस वजह से जो indifference curves हैं, they are convex to the origin. Next, indifference curves जो हैं, they do not intersect each other, right? इस figure में आप देखें, if we talk about indifference curve 1, according to that, A जो combination A है that is equal to combination C, and in case of indifference curve 2, curve के according जो combination A है that is equal to combination B, but practically अगर आप देखो combination B में OY commodity के जो units हैं वो ज़्यादा consume किए गए हैं and combination C पे OY units के जो OY commodity जो है उसके जो units हैं वो less consumed हैं।
सो B कॉम्बिनेशन जो है दैट इज नॉट इक्वल टू C. Thus, जो indifference curves जो हैं they do not intersect each other. Another important property is upper indifference curve indicates a higher satisfaction. You can see in this figure जो indifference curve 1 है वहाँ पे जितने भी combinations होंगे two commodities के वो definitely higher level of satisfaction देंगे to the consumer, और जितने भी combinations होंगे indifference curve 2 वाले curve के ऊपर वो lower level of satisfaction देंगे to the consumer. Now we will discuss PYQs on the basis of properties of indifference curve. So this is a question which usually NTA places in front of us. Which of the following is not the basic property of indifference curves? तो आपने वहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. उन्होंने पूछा है which is not the basic property of indifference curves. We have just learned that point number 1, indifference curves have a negative slope. Yes, so that is a property. Point number 3, indifference curves do not intersect nor are they tangent to one another. हमने ये भी property अभी प्रिपेयर की है. लास्ट फोर्थ पॉइंट इज अपर इंडिफरेंस कर्व्स इंडिकेट, ध्यान रखना है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लिखा है तो यस दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व. सो पॉइंट नंबर 2 जो है दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी. सो रीड इट. इंडिफरेंस कर्व्स ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर कनकेव. तो जो यहाँ पे हमारा कीवर्ड है दैट इज कनकेव. इंडिफरेंस कर्व्स जो है दे आर नॉट कनकेव टू द ओरिजिन, दे आर कन्वेक्स. इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम इलैबोरेटिवली फर्दर डिस्कशन करते हैं. So let's discuss this now. So you need to prepare this concept now in order to get that JRF, in order to attempt difficult questions in your UGC NET exam, right? So left side पे I have written diminishing MRS. अब आप सभी को पता है कि जो indifference curve analysis है it is based on the concept of diminishing marginal rate of substitution. So according to that जो दो commodities हैं they are imperfect substitutes for each other, and because of that जो indifference curve की जो shape है that is convex. I have written over here that is convex. You can see the figure over here that ये जो curve है it is convex. Based upon MRS कि जो ratios हैं you can see below. डिमिनिशिंग MRS के केस में रेशियोज जो हैं वो कैसे आती हैं 3:1, 2:1, 1:1. वी हैव डिस्कस्ड दिस इन आवर प्रीवियसली हमने इस चीज को डिस्कस किया है राइट कि 3:1, 2:1, 1:1 ये रेशियो जो है कैसे आई है. In order to get one additional unit of a commodity, a consumer is willing to sacrifice first of all 3 units of commodity, then 2, then 1. तो जिस रेट पे वो sacrifice करने के लिए तैयार है वो रेट जो है वो diminish हो रहा है, इसलिए it is called as diminishing MRS. So remember, indifference curve analysis जो है it is based upon diminishing marginal rate of substitution concept. Next, अब आपके माइंड को ये एक और टर्म पता होनी चाहिए that is constant MRS. Constant MRS के केस में आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे ये वो वाले प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है, वो वाले कमोडिटीज की बात की जा रही है जो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे एक दूसरे को. सो आई हैव रिटन ओवर हियर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. सो इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कांस्टेंट होगा. So in this case जो curve है that will be a straight line as shown in this figure you can see over here. तो जो ratio है that will be 1:1, 1:1 क्योंकि जो commodities हैं वो perfectly substitute कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जिस रेट पे वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं that rate will be 1:1, 1:1, right? Another term is increasing marginal rate of substitution. अगर increasing rate के ऊपर दो commodities substitute कर रहे हैं then जो curve है that will be concave in its shape. तो वो जो curve आएगा that will be concave in its shape. I repeat, तो ratio जो है इस केस में कैसे आएगी this type 1:1, 1:2, 1:3. इसका क्या मतलब है जब कंज्यूमर जो है एड ऑन कर रहा है 1 मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी राइट, सो वो सेक्रीफाइस कर रहा है दूसरे कमोडिटी को के यूनिट्स को एट अ इंक्रीजिंग रेट 1, 2, 3. So this is the concept. I hope it is clear to you. So जो अभी हमने PYQ डिस्कस किया था उसमें उन्होंने कहा था कि indifference curves जो हैं imperfect substitutes के are concave. No, that is incorrect. क्योंकि जो
इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट जो भी imperfect substitutes हैं they are convex to the origin, right? So let's prepare an PYQ based upon properties of indifference curve. Read this question carefully and I want you to answer this in the comment section below. Okay, so now let's discuss this PYQ. You have to read it very carefully. Why? Why is an indifference curve convex to the origin? Question is this कि indifference curve जो है वो convex to the origin क्यों है? So you have to read it very carefully. This is a combination question. First point जो A है, indifference curve slope downward to the right. Yes. But ये जो है ये इसकी property है. This is the property of indifference curve. ये reason नहीं है. नेक्स्ट जो बी पॉइंट है, टू कमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, जो अभी हम पहले डिस्कशन कर रहे थे कि जब टू कमोडिटीज जो हैं वो इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं, इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है दैट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, तो वो सारे हमारे कीवर्ड्स हैं, वो सारे रीजंस हैं कि हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है. सो पॉइंट बी दैट इज टू कमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, दिस इज द रीजन. पॉइंट सी डिक्लाइनिंग, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू रीड आउट के डिक्लाइनिंग लिखा है, डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन कमोडिटीज. येस, दिस इज द रीजन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स टू बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. देन पॉइंट डी जो है diminishing marginal utilities, this is not connected to the reason. So आपने आंसर जो है अपना appropriately choose करना है from the options that is 1 2 3 4. क्योंकि points B and C correct हैं तो आपने second option को अपना आंसर जो है select करना है. I hope this question is clear to you. All the best for your preparation for UGC NET exam, and if you want me to discuss more such topics related to paper 2 of commerce, management or economics, you can comment in the video below. And if you want to prepare paper 1 PYQs with explanation, you can go to the link given in the description box with respect to my book published by Oxford University Press. This book will really help you. इसमें जो PYQs हैं उनकी explanations जो हैं detail में दी हुई हैं, why an option is a correct answer and why the other options are not the correct one. Relevant content, relevant explanations are there which will help you to clear your exam. So all the best. Thank you for watching this video session.